Good evening, everyone. Am I audible? So we shall start our journey. What we were having, people who are having their first class. Is there anyone in the class who's having this first class? Okay, there's one person here. So actually, we are continuing the economic survey. So you may find it hard to understand. So I will try to dilute it as soon as possible. And कोई भी चीज समझना है, anything that you could not understand any point, you can raise it. Yeah, बाकी student क्या, they have covered a lot of things, so they make understand easily. You may find it hard, but always welcome to ask anything. You can raise you any issue anytime. Is it clear? चलिए. So this is the fifth chapter. We had done 4 chapters so far. That is inflation. Particularly, we will deal with inflation. थोड़ा सा let me give you a background so that it will help you. So basically, we understand in economics something called monetary policy. It is different from fiscal policy. Fiscal policy basically is the policy of government. How much government will tax, how much they will give to the people. The budget जो आप सुनते हैं ना, every year की budget has been presented by the government. Primarily आप समझ लीजिए
That is fiscal policy for basic understanding. Monetary policy is of central bank. Every country has a central bank that looks at the economy. India's central bank is RBI. So that what they do in the economy is known as monetary policy. What is this monetary policy? Basically, they adjust the supply of money. How much money is available in the market, they adjust. That is the simple thing. Example, it's obvious. If you have money, you will buy things. When you will buy things, that zoom करना है. Is it better now, Afifa? Zoom out. इसमें ज्यादा हो गया. अब is it better और करना है? Fine now. Okay. So let me come back. So you have something called monetary. अलग अलग डिवाइसेस पे हो क्या आप लोग पीसी पे नहीं हो क्या अच्छा फीफा मोबाइल में है अभी भी तो मोबाइल से फ्यू दिस केस में तो वैसे 12 चैप्टर रहा था तो अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे आई विल ट्राई टू मैं कोशिश करूंगी जल्दी खत्म करूं समरी टाइप में डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं और मे बी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास इफ फीजिबल वी विल कंटिन्यू बैक विद करंट इवेंट क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है हमारा इकोनॉमिक सर्वे के चक्कर में इज क्लियर अच्छा हाँ एक और थिंग रहा था दैट गवर्नेंस के नोट्स अच्छा ध्यान देना हैव यू रिसीव्ड दैट सम एक सेकंड कमीशन पार्ट मैंने उन्हें पूरे दे दिए थे आई टोल्ड देम टू स्कैन मैं फिर एक बार अपडेट ले लूंगा कि कितना भेजा है तो आस्क देम टू सेंड ऑल द नोट्स इफ डज नॉट कम ना तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी अगर नहीं मिले तो आई विल मेक श्योर यू गेट इट चलिए सो लेट्स कम बैक हाँ सो व्हाट आई वाज सेइंग ओके तो हम दो चीजें समझे दिस समथिंग कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी समथिंग कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक RBI it regulates adjusting the supply of money in the market that is basically your monetary policy fiscal policy that is I told you government का जो expenditure वगैरह होता है so what happens if you have money you will buy something in the market you will buy you create something called demand and demand and based on demand and supply you have inflation मान लेते हैं you are एक पेन है if 10 people are demanding a pen it may be priced at मान लेते हैं 10 rupees but if 100 people start demanding the pen so of course that person will raise the price of the pen भाव बढ़ जाते हैं ना जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को ज्यादा लोग प्रपोज कर दें भाव बढ़ जाते हैं सेम यहाँ पे भाव बढ़ेंगे यहाँ पे कैसे भाव बढ़ जाएंगे 100 रुपए इट्स एज सिंपल एज दैट जितने ज्यादा प्रपोजल होता है ज्यादा भाव बढ़ जाता है सेम थिंग हैपेंड हियर तो पेन जो है उसका प्राइस बढ़ गया दिस इज वी कॉल इन्फ्लेशन जो हम आज समझना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन so what is inflation inflation means two things either the prices have gone up देखिए from 10 to 100 rupees or I can also say the purchasing power of money has gone down पहले 10 रुपए में you could buy one pen now 100 rupees में you are buying one pen so it means the power of 10 rupee has gone down जो किसी जमाने में 10 रुपए की पावर थी वो 100 रुपए की पावर है दैट व्हाट इट मींस सो इन्फ्लेशन मींस टू थिंग्स either the purchasing power either the purchasing power of the domestic currency india's case mein rupee has gone down or
The prices of commodity has gone up. These are the two meanings. These are the two meanings that we have here. ठीक है. अब we have to understand what is the role of monetary policy here, and ये इस chapter में हम समझेंगे what government has done to rein over it. मैं अभी I am explaining you all concept. जल्दी से we will have a review of the chapter. जल्दी से खत्म हो जाएगा. तो monetary policy में क्या होता है? RBI has certain tools. RBI has certain tools. What RBI has to do? Whenever there is more demand than supply, ऐसे means if demand is more than supply, of course the prices will go up, something we call inflation. So RBI क्या करता है? RBI try to reduce money in the market. अगर आप पे कम पैसा होगा, if you have less money you will buy less. Less buying means less demand. Less demand means less inflation. That's the common sense. So that is chapter before it. हाँ, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आ जाता है. बेसिकली मनी सप्लाई कम करना. बहुत तरीके होते हैं. दैट इज द चैप्टर बिफोर वी डिस्कस्ड रिपो वगैरह जो है इकोनॉमिक्स में हुआ आर हैविंग दिस फर्स्ट क्लास. डोंट वरी, इकोनॉमिक्स में वो कराया जाता है. वी आर जस्ट हैविंग अ ग्लिम्प्स हियर. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. अब इन्फ्लेशन में कुछ टूल मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ. देयर इज समथिंग वी कॉल सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई. अब हाउ वी गेट टू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन, हाउ मच इज इन्फ्लेशन. So these are the two most popular indexes of inflation. CPI means consumer price index, means the price that you get from the shop. When you go to a shop, buy something, the price that you get is consumer. WPI means wholesale price index. Yes, WPI means wholesale price index. The price a wholesaler witnesses. They have various differences and various similarities जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. But remember, which is, you tell me, common sense से बताइए, which is more concerning for you, not for the government. आपके लिए क्या concerning है, CPI या WPI? Especially the new student जो भी थे. समझ में आ रहा है सबको? CPI because it's consumer price index, what you pay for buying a commodity. That's a bigger concern for us. WPI pass on हो जाता है. So CPI is the main concern. This is known as headline inflation. इसी पे बेस होती है. The name is headline inflation. मतलब something you see in news. जब आप पेपर खोलते हैं, पेपर में that. Yes, Sabina, that is why it is now measured by CPI. So CPI is known as headline inflation. Headline नाम से समझ में आ रहा है. Something you have a headline. The way you have newspaper, newspaper में headline होती है. So that inflation is basically based on CPI because government wants to understand what you people witness. Ultimate payer आप हो. That is the concern of the government. WPI क्या है? Wholesaler payer. It is passed on. Simply I am a wholesaler. If the prices that I am receiving are gone up, मैं pass कर दूंगा consumer को. So I am less impacted, of course. Impact तो पड़ता है, but still I can pass it to you people. So CPI is the main concern. यहाँ तक सब clear है? Amoria. Is T silent in your name? This it is Rishi. Rishi. अच्छा, cool. So this is called headline inflation. Something that you see in headline and it is largely based on CPI. WPI पे पहले होती थी. Now we have done away with that. So WPI, CPI. What are the differences? Later on समझेंगे. Basic understand ये है कि CPI is the prices that you witness while buying something. WPI is the inflation, rise in prices at wholesale level, not at the consumer level. That is the concern. अब headline inflation में एक common चीज होती है. Headline inflation also include the impact of in volatile commodity. What is this volatile? Let's understand. Volatile commodity. Because volatile commodity like fuel prices, food, इतना volatile. ठीक है. हाँ, fuel, gold, commodities which directly impact, but they are highly controlled by global factors. खासकर मैं fuel की बात करूँ. So fuel prices are highly influenced by the global factor. The reason being India is less capable of fuel. मतलब 85% of our fuel needs are met by outside of the country, particularly Middle East. So because we are import dependent on the crude oil, and if any event happen in the world,
So we are directly impacted. That's why the prime example is Ukraine war. What Ukraine war has done? Ukraine war has disrupted the global supply chain. And because of uncertainty, people are of course buying less. So Ukraine war के कारण the supply chain has been disrupted and the fuel prices had gone up. Remember, economic survey is talking about 2022, not 2023. Today की बात नहीं कर रहा economic survey. Economic survey is past years analysis. 2023's analysis will be in 2024 economic survey. यहाँ तक क्लियर है सबको? Any question so far? Especially the new person, Amoria. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डोंट शाई अवे. अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क एज मेनी टाइम एज यू वांट. ठीक है, चलो अब लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. देखते हैं व्हाट इज देयर. तो पहले ही मैंने आपको इम्पैक्ट बताते हैं. इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज बीन अंडर कंट्रोल फ्रॉम इतना टू इतना, बट फ्यू इवेंट्स आर फोर्स्ड टू गो बियॉन्ड टॉलरेंस लिमिट. व्हाट इज दिस टॉलरेंस लिमिट? ये आपको एवरीवन नीड टू रिमेंबर दिस 6%. यू हैव टू कीप रिमेंबर द अपर. दिख नहीं रहा, जस्ट अ सेकंड एवरीवन. हाँ, सो दिख नहीं रहा आप लोगों को. लेट मी जूम इन देन. अब ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर. सो इन्फ्लेशन वाज अंडर कंट्रोल, बट 2019 से वी नो वेरियस इवेंट हैपेंड. वन ऑफ देम, it has not mentioned one event which it should have demonetization. We know why, because economic survey are government's view about the economy. Remember this economic survey is government's view of economy, not scholars view. Scholar view alag hota hai, they analyze these things. Demonetization also did something with the inflation. Let's understand later. So the COVID pandemic, as soon as a pandemic hit, what you people have a tendency, क्या करते हैं आप लोग जैसे pandemic होता है? सेव करते हैं. मैंने आपको समझाया था एक टर्म, बाय मोर. अच्छा हाँ, मतलब ये सेइंग यू वी शुड बाय मोर. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ, एक टर्म वी डिस्कस्ड अर्लियर कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? as soon as paradox of thrift क्या होता है? As soon as the crisis hit, so what you start, you all got scared. Common sense है, common people get scared. What they do is everyone just start saving, because they know कि crisis आ गया, maybe in future things may go south, and that is why they start sharing. Sorry, sharing कह रहा हूँ. That is why they start saving. अब problem क्या होती है? Because you save, you increase the crisis. Understand how? देखिए सिंपल सा है. As when there is a demand which is greater than supply, so there is a gap. मान लेते हैं people are demanding 10 commodity, market has 6, so there is a gap of 4 commodities. इससे क्या होता है? It signals the corporate India or around the world corporate that there is a gap of demand. So if I am a businessman, I will seize this opportunity. मुझे पता है the 10 demands is there, 6 are being given, means 4 की space है. So what I will do, I will lay a new factory. But because as soon as the crisis hit, you people start saving rather than spending, the demand goes down. This gap automatically bridges. मतलब demand may even, sometime it may happen, the demand may go beyond below supply. So सीधी सी बात है, supply is more than demand. Means 6 commodity are in market, 4 are in demand. There's a gap of 2.
तो मैं नहीं खर्च करूंगा। आई एम अ कॉर्पोरेट, आई विल नॉट ले अ न्यू फैक्ट्री बिकॉज मुझे पता है एग्जिस्टिंग कमोडिटीज आर नॉट बीइंग बॉट। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई विल स्टार्ट कटिंग माई स्टॉक। So that's what happened. You save, demand go further down, more businesses close down, then more unemployment, more salaries lost, so more demand goes down. So it is called paradox of thrift. Rather than dealing with the crisis, we all exacerbate or aggravate the crisis. That's why the paradox word is used here. यहाँ तक क्लियर? तो दैट इज व्हाट हैपन। पर अब एक चीज मुझे बताइए, अच्छा अभी कर लेते हैं पहले। तो कोविड 19 से व्हाट हैपन, यू स्टार्ट सेविंग, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हैपन। अनदर रशियन यूक्रेन वॉर मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल सप्लाई चेन के कारण द क्रूड प्राइसेस हैज गॉन हायर, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल बता ही दिया मैंने आपको। मेजॉरिटी ऑफ आवर डिमांड आर मेट बाय द आउटर वर्ल्ड, वी डू नॉट प्रोड्यूस मच क्रूड ऑयल, वी इंपोर्ट। as soon as the crisis hit, of course the prices will go high in a crisis. तो इसमें एक चीज मुझे समझाइए, मैंने आपको क्या समझाया? As soon as the crisis hit, demand goes down because you start saving. Then why there is inflation? Common sense लगाइए। मैंने क्या पता व्हाट इज इन्फ्लेशन? लेट मी यहाँ पे, इन्फ्लेशन का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, प्राइसेस गोइंग अप, परचेजिंग पावर गोइंग डाउन। बट inflation is happening when demand is more than supply. Price goes up when more people are demanding a commodity. Yes, bilkul sahi. The reason is the current inflation in India is supply push inflation hum bolte hain. There are two kind of inflation. One is called demand pull, means when demand is more than supply, so of course demand is more than supply, so of course prices will go up. This is called demand pull inflation. Ek hoti hai supply push inflation. Supply push, let's say demand is 6, initially supply was 4, ठीक है, fine. Demand is constant again, but supply has gone to 2. So the distance between demand and supply has increased, not because demand is more, but because supply is less. Such kind of scenario is known as supply push. India is witnessing a supply push inflation, not a demand pull inflation. ये सबको समझ में आया? Is it clear? ठीक है, that is what is highlighted here. COVID-19 pandemic was there, you start saving and all. Ukraine war is there, all global conflict. Because of Ukraine war, food prices went high, and I told you everything is transported by roadways. Roadways में you have trucks, trucks run on diesel, and diesel के price अगर बढ़ते हैं तो automatically all commodity prices rises. First thing, COVID-19 pandemic hit, your demand came down, but nonetheless supply chain disturbance इससे भी हो गया. Russian-Ukraine war led to supply chain disturbance around the world. COVID-19 pandemic led to supply chain disturbance in India itself. So main reason जो अगर आप देखेंगे inflation का in India में right now is it is a supply push inflation. Please remember this word, supply push inflation. If UPSC asks you what are the reason of current inflation in India, so what you will write, there will be numerous options. The reason is supply push inflation we are witnessing. ठीक है? अब what will happen? You tell me, if there is inflation, what the central bank do about it? क्या करेगी central bank? क्या हो गया ये? बोले guys, what the central bank will do when there is inflation? नहीं, tool ठीक है. And what was that person name? ये तो tools हैं सारे. I got the point. Basic essence है. What was the name? Amoria. Yes. What the RBI will do, Amoria? टिका वाइल्ड गैस नहीं पता, कोई इशू नहीं है. अच्छा, शी इज डिस्कनेक्टिंग. देखिए, हाँ बहुत तरीके हैं. बेसिकली आरबीआई विल इंक्रीज मनी इन द मार्केट. इसके लिए बहुत से टूल हैं. इट कैन डू रिपो वाला टूल, रिवर्स रिपो टूल, सीआरआर, एसएलआर. और एक नया टूल जो मैंने आपको बताया था, कितनों को याद है? आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट है. अ न्यू टूल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई रिसेंटली 2022 में. ना ईबीएलआर नहीं है. यस, एसडीएफ. एसडीएफ मैंने आपको समझाया था. एसडीएफ विच इज लाइक अ रिवर्स रिपो बट विदाउट सिक्योरिटीज. यस, बिल्कुल. तो ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं. दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी टाइटनिंग. इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग.
So what happened? As soon as this inflation hit, RBI started monetary tightening, and the reason is it is a supply push inflation. Okay. Role of RBI, RBI took various steps like monetary tightening, particularly. What government did? Government on its behalf, I think Radha said this, primary concern of food. मैंने आपको एक चीज समझाई थी, what is the higher limit of inflation? Acceptable higher limit 6%. Why we have put a 6%? Because if inflation goes above 6%, there are high chances that the common people will be hurt. A lot of food will go out of the food basket of common people of India. That's our concern. So government ने सबसे पहले reaction किस पे करा? Government reacted by releasing more food, and second by reducing import duty on certain food items. That's how government reacted. If you release more food in the market, of course the food prices will go down because increased supply of food basically. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाई दिया what is headline inflation. Headline inflation is the basically CPI based inflation that you see in the newspaper, particularly. Food inflation. The food inflation based on CPI climbed to 7% in Itna. This figure is not important. You do not need to remember. From 3.8, it went short to 7%. Cereal, pulses, edible oil. इसमें भी आपको याद रखना, all you need to remember is government took various steps. अच्छा, आप मुझे बताइए, will I increase export or decrease export? Will I increase export or decrease to control inflation, to slow the inflation? Export बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? Yes, घटाएंगे. Because if export is less, then more commodities are available within India. More people. और बताइए मैं import बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? Because this is what government does. Export import government के control में होता है. Dilip, I will increase it. I will increase import ना, ताकि more commodities are available within the country. ठीक है. So I will, so that is what government ने ये सब इसमें लिखा है. देखिए, regulation of wheat flour exportation, imposition of export duty. Basically, I am trying to reduce export by duties, by quota, जो भी मेरे capable होता है. ठीक है. And I will increase import. That's a reduction in import duty. So we have seen two things. As soon as the inflation hit, two things happened. RBI started monetary tightening policy. As soon as the inflation hit, RBI started monetary tightening. That is withdrawing money from the market. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, क्लाइमेट चेंज इज नो डाउट अ फैक्टर. और फिलहाल तो जो हमारा मेन सा रीजन रहा था, दैट वाज द सप्लाई. इसके लिए यहाँ हम इकोनॉमिक्स नहीं कर रहे. आई विल टेल यू, गवर्नमेंट ऑलवेज मेंटेन अ बफर. गवर्नमेंट बफर रखती है. एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो होती है उसका काम ही ये होता है. इट कीप्स अ लार्ज बफर ऑफ दिस कमोडिटी, खासकर व्हीट एंड राइस का, टू पुश एंड पुल, ताकि प्राइस मॉडरेट रहे. ठीक है, चलिए. So we have understood two things. What happened is, as soon as the inflation hit, RBI started to withdraw money from the market, because less money in the market means less demand will be in the market. Monetary tightening we call it. What government did? Government tried to reduce Government tried to reduce export and increase import, so that more and more commodity remains within India. Particularly, government focused on food, because food inflation hurt the common people, which is the vote bank of government. RBI को इतना फर्क नहीं पड़ता उससे, but because RBI is not elected body. आप देखते हैं what are the trends? Rural urban inflation differential is decline. If you see financial year 2022 में, there was a differential between rural and urban, with urban areas experiencing a sharper increase in food prices of vegetable oil during the time of compared to hinterland. Meaning, when Corona hit, urban areas में prices shot up. Common sense है, because urban area में agriculture is not produced. Rural area में तो वहीं पे खेत है आपके पास. The farmer have the farms are near to you. So of course the distance between the consumer and the producer is less. So वहाँ पे inflation was not that high, but urban area में it was high. But as economy is opening up, so of course more and more from rural areas coming to urban areas, and that's why inflation is now moderating. Means the gap between rural and urban is closing down.
पॉइंट सबको समझ में आया? Clear enough? Yes, that is what we have here. So this is what we have. During Corona, inflation in urban area was high, rural areas less. But now, as the economy is opening, the barriers are being removed. The more products are being transported from the rural area to urban area, so urban inflation is also going down. That is what we have. आप समझते हैं WPI. So CPI जब बढ़ा, CPI में remember अभी आगे करेंगे. When CPI increased, there were two measures. RBI started withdrawing money from the market. There were various tools which we have done in previous chapter. Withdrawing money. When CPI increased, government particularly focused on food. For this, it started to decrease export, increase import. Okay. So this is what when CPI happened, government did. Let's see what happened. What they did in WPI. When WPI increased, which was very high, 13%. So what they did is same mechanism. They reduced excise duty on petrol and diesel. I told you the reason why. Because petrol, diesel, se most of the commodities are transported, and if they rise, petrol, diesel prices rise, the inflation happens. So they reduce the petrol, diesel prices. They reduce import duty on various commodity, of course, to increase import. They increase taxes on export, of course, to reduce export, and they reduce custom duties on cotton, diamond, gemstone, whatever product, ताकि more and more things come in. Simply saying, government try to promote imports and reduce exports. Clear, everyone? ठीक है. अब लेट्स सी द रिलेशन. अभी तक हमने क्या क्या समझा? सीपीआई गवर्नमेंट एफर्ट, आरबीआई एफर्ट. डब्ल्यूपीआई गवर्नमेंट एफर्ट, आरबीआई एफर्ट. देन वी अंडरस्टूड द convergence of urban inflation and rural inflation. Now we are seeing the convergence of WPI and CPI. CPI is consumer price inflation that I told you that you people witness. WPI what a wholesaler witnesses. So usually WPI remains more than CPI because government is sensitive to CPI. CPI hurts its vote bank, particularly the critical vote bank. Why this bridge is there? The reason is there are different commodity in the index. WPI may the maximum weightage that we give is manufactured items, 65%. The maximum weightage of items in WPI is manufactured item. Along with it gives high weightage to crude oil and gold kind of things, which are highly fluctuating in demand. And Corona war had impacted WPI directly because crude oil and gold and sorry, Ukraine war impacted the crude oil and Corona lockdown impacted directly the manufacturing, and that's why they increased. ठीक है. Second, CPI. Why CPI में इतना distance है? Because CPI depend heavily on food item. 50% weightage है food item की CPI में, highest weightage. So for prelims आपको क्या याद रखना? For prelims you have to remember that WPI, the maximum weightage in WPI is manufactured good. It also have a high weightage of crude oil and gold, but the maximum is manufactured items. In CPI the maximum weightage is the food. Percentage याद नहीं रखना. Clear है सबको? उसमें है क्या बोलते हैं? CPI में है. ठीक है. Another thing you have to remember, services are not in WPI basket. Services, for example, when you go to a restaurant to eat something, you give a service charge. Waiter जो आपके पास आता है to do the serving and other kind of thing, जो service दे रहे हैं वो, providing you to eat food to eat in a particular place to sit and all, services they are providing. So they charge a service for that, something a wholesaler does not do. So that's why services are not part of WPI. ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं for prelims compulsory. मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जो ऊपर हमने किया that what government did, what RBI did, that is more important for mains, and inter prelims में linkages are important. सबको समझ में आ रहा है? Everyone is clear? The new guys are clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो हम प्रीवियस थोड़ा मैं बता देता हूँ. चलो for new kids let me tell this. RBI Monetary Policy Committee, we did this in earlier chapter. I'm just refreshing the memory. RBI Monetary Policy Committee. I told you what is monetary policy.
arranging the money in the market, that is increasing, decreasing the money in the market. And RBI Monetary Policy Committee does that. It decides what will be the repo, reverse repo, जो भी tools है. RBI has certain tools to influence money in the market, and that is decided by RBI's Monetary Policy Committee, headed by, of course, RBI Governor. So it decided. It has used a term called Liquidity Adjustment Facility. What is LAF? Previous class में बताया था मैंने. What is LAF, guys? बिल्कुल सही. It's repo and reverse repo. For new guys, let me tell you what is repo. Repo is a tool which is used by RBI to give money to the banks. Simply ऐसे समझिए, the bank give you loan. For that, it charges something. Bank charges something to give you a loan basically. कुछ interest लेता है जो भी 6 या 7%. Bank decide that based on something called at a rate, that is repo rate, that is decided by RBI. It is a rate at which RBI gives money to the bank. RBI give money to the bank the way bank charges some percentage to you for giving a loan. Similarly, RBI charges some percentage to give loan to the bank, known as, that rate is known as repo rate. जैसे आपके केस में loan rate, you call it loan rate. RBI, when bank goes to RBI to take money, it is called repo rate. Reverse this is reverse repo, RR basically. When RBI approaches bank to take money or bank approaches RBI to give money, repo में bank approaches RBI to take money. In reverse repo, bank approaches RBI to give money to RBI. That is called reverse repo. Clear everyone? Especially the new guys का नाम है अमोरिया. क्लियर नहीं आया तो प्लीज मैं अगेन कह रहा हूँ, प्लीज यू कैन कीप ऑन आस्किंग. Okay. Next, let's see housing prices. So, according to economic survey, housing prices are recovering. आप common sense लगा सकते हैं. Do you remember a concept in previous class we understood? I think chapter second. Something demand, a demand which was not being shown because of corona. एक term थी. मैंने बोला था आपको याद रखनी है सबको. Yes, pent up demand. What is pent up demand? मैं बता देता हूँ for the new guys. देखिए, pent up demand is basically means revenge spending. देखिए सिंपल सेंस है. इफ यू लव पिज्जा एंड यू हैव अ प्रीलिम्स, फॉर एग्जांपल यू लव कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, जो भी है, प्रीलिम्स पास में, यू विल ड्रिंक लेस, यू विल ईट लेस आउट फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज यू मे थिंक आई मे गेट इल एंड देन प्रीलिम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी. सो बट एज सून एज यू गिव द प्रीलिम्स, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ देयर इज you start eating. What you do is you start eating or you start drinking. Simply भाई जो चीज मैं छोड़ रहे थे अब मैं करूंगी because प्रीलिम्स हो गया, अगर बीमार पड़ भी गया तो कोई बात नहीं, I will take care of that. I have sufficient time. That is called revenge spending, and that's why people were within the four walls for 6 to 7 months. As soon as the lockdown was lifted, people started spending. They started visiting places. You were thinking of buying a car, आपने delay किया हुआ था, but as soon as the economy started boosting, you start spending, and that's how the housing prices are recovering over time. Clear everyone? ठीक है. So let me summarize for you. I think this is the chapter in its entirety. हाँ ठीक है, यही है. Let me summarize for you. So simply what happened? Inflation gone high because of three reasons: Corona induced lockdown, the Ukraine war, and demonetization. मैं इससे नहीं किया economic survey में, but nonetheless, ठीक है, because of these some supply side shock came and inflation was going up, particularly because of these two reasons: Corona and Ukraine war. इससे डील करने के लिए there were some efforts of RBI, that is called monetary tightening, that is withdrawing money from the market, and some efforts were taken by the government. ठीक है, various efforts, particularly decreasing export and increasing import, ये particular efforts. ठीक है. Apart from this, we understood that urban areas mein, when lockdown was imposed, inflation was more than rural area. The reason is very simple. Rural area has better access to production, food particularly. Urban area mein, it comes from rural area. So because of borders lockdown and all, it became hard to bring food to the urban area. That's why inflation was high. But now economy is opening up, so inflation in urban and rural is coming to nearby level. Next, we understood WPI and CPI. WP and CPI, there was a vast gap. Over now, it is narrowing down.
But because WPI covers different item, CPI covers different item, that's why there's a difference between the both. And last हमने समझा housing. Housing prices are again coming to a stability because people are not spending this and that. This is the entire summary of the chapter. Clear सबको? कोई question please ask. Then we move to next chapter. Guys, any question? I think नहीं है. चलिए. तो next chapter start करते हैं. That is we have is social infrastructure and employment, the big tent. मतलब what the government is doing about it basically. According to economic social infrastructure आप समझ ही गए, the services and the structure which are essential for you. जैसे for example यहाँ पे आपको दिया हुआ हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर माने पेंशन, विडो पेंशन, एल्डरली पेंशन और सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी नेट. जैसे हेल्थ के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, इस तरह की स्कीम्स, दे आर वेलफेयर स्कीम्स. सो according to economic survey there is a rising trend in the share of social service expenditure. सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर हम देखें 45.2 से अब हम 80.1 पे आ गए हैं. टोटल एक्सपेंडिचर इन लैक्स करोड़, मतलब 45.2 लाख करोड़ से वी हैव कम टू 80 लाख करोड़. दैट इज 2022 to 2023 भी प्रीवियस ईयर की बात हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू इट since 2017 the expenditure has gone up. But remember it is not in absolute numbers. मान लेते हैं you had 100 rupees. Earlier you were giving 2 rupees to this and remaining 98 rupees to various kind of scheme. This one is social welfare. Up you have 1000 rupees. Still you are giving 4 rupees to this and remaining rupees to, that is 996 to somebody else. तो दिखने में लगता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, बट इट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एंटायर कैपेसिटी दैट मैटर्स. नॉनदलेस गुड आइडिया. यहाँ पे क्लियर है. एंड द परसेंटेज इज 26.6. फर्स्ट थिंग इज क्लियर. आपको क्या याद रखना? ओनली थिंग ये फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. Only thing you have to remember is according to economic survey previous year there was a rise in social service expenditure from 2016 to 2022. 2022 there was a rise in expenditure. That's it. Rise in expenditure was in health. There is something called National Health Policy. Government of India brought a National Health Policy in 2017. Something you will study in governance, GS paper 2, in detail. But let me tell you one thing about it. Under National Health Policy, government decided that government currently carry out only 1 point. ये figure आपको याद रखना है. Government carry out only 1.2% of GDP. This is the expenditure. Government has envisaged in this policy to increase it to 2.5% of GDP by 2025. How much it is they will देखेंगे. But according to economic survey, government expenditure health as total expenditure social service has increased from 21% to 26%. इसमें primary role आपका किसका? कोरोना का. We all know after Corona, government invested a lot. Parents they never cared about government hospital, but now they do. Anyway, this is it. Another, Finance Commission has also recommended to increase the expenditure on health, combining union state together to 2.5. बस ये तीन चीजें याद रखनी है. So what is rise in health expenditure? What is the rise? Expenditure on health by the state and center is on rise. The target is 2.5% of GDP by 2025 as per National Health Policy. These things you have to remember. Clear everyone? So this is the first thing. Next, improving human development parameters. अब इसमें आप क्या बोले, देख लेते क्या बोलना चाहते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स में देखिए एक ही चीज हम सबसे ज्यादा देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. It is published by an international body known as United Nations Development Program. United Nations is a world level body for governance and that body publishes some indicators. One of that is Human Development Index. It is published globally and various countries are counted here. According to it, there was a fall in India's HDI ranking. इसने देखिए क्या एक्सक्यूज बनाया है, that there is a fall in around globally there is a fall in human right development indicator, so does in India. But we know the primary reason. What is the primary reason of fall in HDI ranking of India? Human Development Index ranking. Yes, a neoliberal government that basically favors a corporate-led policy. They do not believe in direct intervention program, and that's why inequality is rising at a fast pace. देखिए
एक होता है HDI, एक होता है इन इक्वालिटी एडजस्टेड SDI, जिसे हम बोलते हैं IHDI। IHDI में तो हमारे और बुरे हालात हैं। HDI में we have gone down, मतलब the people of India are less prosperous today than they were in the previous year. It is a bad news. But IHDI में we are even worse. HDI means Human Development Index overall general level. IHDI means inequality adjusted Human Development Index. In that we are even bad. I think the one is asking something. Raman, you are asking something. Moria, any question you have? दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कूल। देखिए, ह्यूमन, पहला तो आप समझ गए होंगे, इससे पहले वाला सोशल एक्सपेंडिचर वाला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, वी हैव टू मेजर एवरीथिंग, so we also measure human development। human development मतलब how much you have access to food, how much your nutrition in body, इस तरह के, how much your education, what is your life expectancy at birth। there are some things that we use in HDI index which are known as कॉर्पोरेट में। हम इसलिए अच्छा नहीं कर रहे हैं दमन, बिकॉज मैंने आपको क्या समझाया था, प्रॉब्लम न्यू लिबरलिज्म के साथ क्या है। आई टोल्ड यू व्हेन अ क्राइसिस हिट, कॉर्पोरेट इन्वेस्ट नॉट इवन अ पेनी। डिमांड नहीं है, बिल्कुल सही कहा था। मैंने क्या बताया था, इफ मान लेते कल एसबीआई कम्स टू मी एंड से ले ये लो 10 करोड़ रुपए, जाओ एक फैक्ट्री खोलो, आई विल बी लाइक नो थैंक यू, नोबडी इज गोना बाय एनीथिंग फ्रॉम मी, सो व्हाई शुड आई ओपन अ फैक्ट्री। बट अगर डिमांड है मार्केट में, आई एम अ कॉर्पोरेट, आई नो डिमांड मींस पीपल विल बाय माय स्टफ एंड आई विल जनरेट प्रॉफिट। एंड देन इफ आई हैव टू मॉर्टिगेज माय किडनी टू टेक अ लोन, मैं लोन ले लूंगा, चाहे मुझे किडनी मॉर्टिगेज करनी पड़ जाए, बिकॉज आई नो आई विल रिटर्न इट बैक। क्लियर रमन? चलिए, नाउ लेट्स मी कम टू अमोलिया क्वेश्चन। देखिए, अमोलिया, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशन, your life expectancy at birth, मतलब when you are born, then what is the expectancy, the year you are supposed to live, इस तरह के indicators we have in HDI। so we evaluate that country to country wise and then we create a chart। जैसे आपको रैंकिंग मिलती है ना, फर्स्ट से लेके फेलियर तक, इसी तरह से countries are ranked from top to bottom in their capacity of providing better education, better life expectancy। that is called HDI। It is calculated by a body called UNDP। इंडिया में क्या हुआ है, India's HDI has gone down, मतलब people's quality of living has gone down, and the primary reason is the current government that we have is neoliberal in orientation। What is neoliberalism? Neoliberalism means market fundamentalism। Market fundamentalism, it says market is God। Market fundamentalism is market is God। Everything is demand and supply, the state shall not intervene। मतलब if somebody is selling 1 rupee pen for 1 lakh rupee, the government should not intervene। that's neoliberalism। and neoliberal governments are corporate friendly, they provide incentives to corporate। now is it clear, Amoria? So HDI has fallen down, क्या कर सकते हैं। Another index that we have, देखिए these all are very good for economics, particularly prelims। Gender inequality index, India ranked 122, which is better than South Asian region and close to the world average। So India is at the world average according to this multi-dimensional poverty index। what is multi-dimensional poverty means? Multi-dimensional poverty means देखिए poverty, पहले तो poverty समझ लेते हैं। Poverty does not mean only absence of money। you can be poor even when you are rich। मान लेते हैं you are an IAS officer but you have a very troubling partner, हर वक्त जीना हराम कर रखा है, फोन पे फोन, फोन पे फोन। so what will happen, you are multi dimensionally poor। बात समझ रहे हैं? मल्टी डायमेंशन मतलब a human has multiple dimension, money is one of it। you have various needs, all needs cannot be satisfied by the money, so various kind of needs when calculated together is called multi-dimensional poverty। and India mein multi-dimensional poor has increased। clear?
तो आप देख सकते हैं हमारा बुरे हालात है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में वी आर डूइंग वेरी वेरी बैड बी इट ह्यूमन डेवलपमेंट बी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बी इट अदर इंडेक्सेस ठीक है तो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू अबाउट इट ठीक है ये हो गया गवर्नमेंट कुछ तो करना चाह रही होगी लेट्स सी ट्रांस अच्छा इसमें एक अच्छी चीज बात आई जैसे राधा इज सेइंग हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया इज बिलो यूक्रेन तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है यार यूक्रेन की बैंड बजी हुई है अंडरस्टैंड दिस इफ अ इंडेक्स इज पब्लिश्ड इन 2022 तो वो आज के डेटा पे नहीं होता वो 2020 के डेटा पे होगा टाइम लगता है यू कलेक्ट डेटा यू एनालाइज यू कंपाइल यू रिसाइकल लंबा टाइम लगता है देयर इज अ डिले ऑफ 1 to 2 ईयर तो आज जो लोग खुश हैं या बुरे हैं वो आपको मिलेगा 2023 में या फिर 2024 में इट्स प्रीवियस ईयर डेटा ये चीज याद रखिएगा डिले होता है डेटा में तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाउ इट कैन हैपन फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया वाज सेड एज द वर्ल्ड पॉवर्टी कैपिटल some student ask सर ये कैसे पॉसिबल है दैट वी आर वर्ल्ड पॉवर्टी कैपिटल लुक एट द कंडीशन श्रीलंका एंड पाकिस्तान तो दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एग्जैक्ट करंट डेटा करंट वाला नेक्स्ट में आएगा क्लियर हाँ यस मल्टी डायमेंशनल यू कैन से ओवरऑल हैप्पीनेस प्रियांशी कई तरह की पॉवर्टी होती है ना फूड पॉवर्टी क्लोथिंग पॉवर्टी हाउसिंग पॉवर्टी अब जनरली गवर्नमेंट पॉवर्टी देखती है मनी टर्म्स में इफ यू अर्न above this you are not poor below this you are poor so multidimensional means you may have money it does not mean you have proper food you may have money does not mean you may have a house so multidimensional poverty any other question to anyone please ask then we will come to government initiative over it हाँ अलावा actually we started this thing that the student were asking Aditya don't worry कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट टू डू क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे लंबा चल रहा है एंड इट इज टेकिंग आवर टाइम टू मच बाकी आई हैव अपलोडेड दिस पीडीएफ दैट्स अप टू यू रीड इट अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क नेक्स्ट क्लास में वी विल स्विच बैक टू आवर करंट इवेंट थिंग क्लियर द फोल्डर सबको मिल गया द एवरीवन हैज हैव द एक्सेस टू करंट इवेंट फोल्डर कोई है बच्चा जो यहाँ पे नहीं हो अमोरी आई बिलीव यू मे नॉट हैव इट जो भी रह गया है हाँ एक मिनट this is the id you have to send a hi there I have added everyone more or less जो रह गए हैं send a hi there I will add you to that folder it contains pdf of all the current event classes from past 1 year all the pdf including economic survey का I have made a separate folder within current event folder वहां पे आपको दोनों से पूरा 12 चैप्टर मिल जाएंगे ठीक है एंड नेक्स्ट क्लास से we will switch back to our normal process ठीक है so transformation of aspirational district program देखिए this chapter is more important for gs paper 2 governance than this this chapter is more important to governance paper than to economics paper so all these socio-economic indicators and all they are basically used in governance let's see what government is doing about it पहला achievement government has started something called aspirational district program paper governance के लिए please remember this aspirational district program government of india started to identify districts government of india started identifying districts where the people are highly deprived मान लेते हैं मल्टी डायमेंशनल poverty is high they do not have proper schools education and all so government decided I will find certain areas these districts which are backward in india and then I will go for intensive development of these areas so let's see what is the achievement in transformation of aspirational district program health and nutrition में many studies have surpassed the average state value in the health and nutrition मतलब it is working good whatever government is investing in aspirational district program it is working well in health and nutrition area financial inclusion में it has performed well basic infrastructure में it has reported better indicators
गुड गवर्नेंस में इट हैज shown better. बेसिकली बेसिकली आपको इतना याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है. अंडर दिस गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट एंड वी गो फॉर इंटेंसिव development of that district. Because of that, it is better in health, nutrition, financial inclusion, basic infrastructure, and good governance. Clear everyone? इसमें एक सब प्रोग्राम है, ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, वही सेम चीज. विद इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स. So within district we find blocks which are left out backwards. District बड़ा होता है, states में district is a big place. So district में there are number of blocks. So on block level now government started to work. Clear? Any question to anyone? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's see next reforms. Other reform that government has brought in labor reforms. Labor reforms में four labor code. What is this labor codes and what is this labor reform? देखिए, what happen, you are a private company. So private company में you have something called labor. So government, in order to ensure that the private companies does not, also the government companies do not exploit the labor class, they make some laws for their benefits. Those are known as labor laws. Within labor laws, government has enacted four different labor codes, particularly draft rules. जैसे code on wages, the wage that the labor will receive. Code on industrial relation, matlab the relation between the industry, that is the management and the labor class. क्या relations रहेंगे? What will be the protocol? Social security माने COVID, your pension fund. When you retire, you will start receiving some salary. Your health benefit, your maternity benefit, your paternal benefit. इस तरह के जो benefit होते हैं social security में. And state occupational safety, health and working conditions. So there are four labor codes, सबको याद रखने हैं. Labor code, there are four labor code: code on wages, code on industrial relation, code on social security, and code on safety, health and working conditions. These are the four important code of labor in India. They have been enacted. And e-shram portal, as the name implies, it is an electronic portal for the labor of unorganized sector. ये याद रखिएगा, unorganized, organized के लिए नहीं लिखा है. जहाँ पे unorganized sector people can register themselves and can avail various facilities like finding a job. आप अपने आप को register कराइए. There will be a lot of people who are looking to hire some people. They can hire you directly from there. Clear? चलिए अगला देख लेते हैं, आधार. ये तो सबको पता है. इसमें मुझे एक चीज पूछनी है, हैव यू यूज्ड आधार सब लोग? अच्छा क्वेश्चन पूछा था मैं तुमने, तो एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको. गवर्नमेंट की स्कीम है, दैट इज नोन एज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना. इट इज अ इलेक्ट्रिसिटी वाला स्कीम टू कनेक्ट द इंडियाज विलेज. अंडर दैट दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, government is trying to electrify the villages. In this, government of India has achieved 100% electrification. अब देखिए यहाँ पे गेन कैसे होता है, सब डेटा का खेल है. 100% मतलब according to government of India, I have connected 100% of the villages from electricity grid. But according to government जो official definition है, a village is considered connected if 10% of the village household is given a connection only. Definition का गेम है. तो कैसे पता लगा? 100% according to government of India, India is 100% electrified. मतलब all villages are given electricity connection. How government identify villages electrified? If 10% of the villages are given an electricity connection. Remember मैंने word क्या इस्तेमाल किया? Connection. It does not mean electricity. That's how it is 100%. Game समझ में आया? That's how the game is played.
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों से। डेफिनेशन अभी ना गवर्नमेंट चूजेस डेफिनेशन, हर चीज डेफिनेशन पे वर्क करता है। जैसे इन जैसे इन्फ्लेशन आपको मैंने समझाया था। इन्फ्लेशन क्या है? राइज इन लोअर, तो गवर्नमेंट पुट्स अ डेफिनेशन टू कंसीडर समथिंग। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं। अच्छा, यू आर सेइंग दैट, अच्छा व्हाई 1%। हाँ ठीक है। इसके लिए इसीलिए कुसुम योजना स्टार्ट हुई है। आई थिंक इसमें नाम है, मुझे आइडिया नहीं। कुसुम योजना स्टार्ट हुई है फॉर, हाँ फॉरेस्ट, बिल्कुल वही, बिल्कुल सही, बिल्कुल अनदर एग्जांपल इज एग्जैक्टली राइट। फॉरेस्ट एरिया, इफ यू सी इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इंडिया में फॉरेस्ट आर राइजिंग, बट वो इसलिए राइज नहीं कर, इमेजिन कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 1980 में वी हैव लेस फॉरेस्ट, टुडे वी हैव मोर फॉरेस्ट। कोई सेंस बनता है इस बात का? कोई भी सेंस बना इस बात का कि वी हैड मोर फॉरेस्ट इन 1990 1980, वी हैव लेस फॉरेस्ट, टुडे वी हैव मोर फॉरेस्ट? ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? we all know we are cutting forest down. The reason is classification. 1980 में we do not have technology to find all the forest. Now we have technology to cover them. तो ऐसा गेम है। हाँ, वाह सीन ये चलता रहता है। एनीवे, चलिए तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आधार का। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव यूज्ड आधार? आई थिंक सबने यूज करा होगा। तो आई वांट टू आस्क वन थिंग, इज इट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? नहीं है, याद रखिएगा सब लोग। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजन, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, इट इज ओनली अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इट आइडेंटिफाइज हु यू आर। इट नीदर से, उसमें बड़े उसमें लिखा भी होता है आधार में, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कीप दैट इन माइंड, वो अलग सर्टिफिकेट बनेगा। चलिए एनीवे, तो आधार में एक पर्टिकुलर स्कीम दैट आई वुड लाइक टू टॉक इज डीबीटी। व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, फॉर एग्जांपल आपके घर में आई बिलीव एलपीजी सिलेंडर आता है, कनेक्शन है आपके पास, एलपीजी सप्लाई है। इज इट एलपीजी सप्लाई और एलपीजी सिलेंडर? तो जिनके घर में एलपीजी सिलेंडर आता होगा, तो आप देखिए प्राइसेस कितने ज्यादा हो गए हैं, अब 1100 के आसपास कुछ हो गए हैं, ना तो मुझे लास्ट चेक याद है। कौन से टाइम पे आई थिंक ये 500 500 के आसपास ऐसे कुछ होता था, अब 1100 के आसपास है। गवर्नमेंट प्लेड अ गेम अगेन, कमाल की गेम खेली जाती है, क्या होता है? रादर सप्लाई में यू हैव अ कनेक्शन टू योर हाउस द वे यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। सिलेंडर में पर्टिकुलर सिलेंडर सा बना होता है, वो आता है। इसका मतलब आपके घर में सिलेंडर नहीं आता है, मतलब आपको पता होता है। कुछ और पूछ रहे हैं आप? हाँ, 400-500 ऐसे ही कुछ था, ज्यादा मुझे ध्यान है। अच्छा, कोई नहीं। सप्लाई में पर्टिकुलर एलपीजी कनेक्शन होता है थ्रू पाइप्स, द वे यू हैव कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वायर, यू आर कनेक्टेड टू ग्रिड ऑफ एलपीजी, जैसे आप इसमें कनेक्टेड है। सिलेंडर में पर्टिकुलरली आपके सिलेंडर बना आता है, इट इज सप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, आपको रिफिल करवाना होता है या अगला लेना होता है। तो एनीवे, तो करंटली एलपीजी सिलेंडर जो है 1100 के आसपास है बेसिकली। हाँ, पर्टिकुलरली आपके पास करंटली 1100 के आसपास है, पहले 500 थे। गवर्नमेंट हाउ इट प्ले, गवर्नमेंट सेड कि 500 रुपए का है, लेकिन सरकार को 800-900 का पड़ता है, ऐसा कुछ पहले पड़ता था। तो गवर्नमेंट सेड कि ये सब्सिडी देती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट यूज्ड टू सब्सिडाइज द सिलेंडर बाय 300-400 रुपीस। तो बीजेपी गवर्नमेंट सेड आई विल नॉट डू दिस, यू हैव टू पे 800 रुपीस, 400 रुपए में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसमें कमाल की बात ये होती है, यहाँ तो आपको दिख रहा है 500 की स्लिप आई, यू गेट द स्लिप फ्रॉम योर लोकल प्रोवाइडर 500 रुपीज, इफ ही चार्जेस यू एनीथिंग एक्स्ट्रा आप लड़ जाओगे। बट अब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल को पता ही नहीं कि उनके अकाउंट में कब पैसे आना बंद हो गए। गवर्नमेंट आई थिंक 2020 में गवर्नमेंट ने रोक दिया था। जिस 400 रुपए जो आपको वादा किया गया था डीबीटी का, गवर्नमेंट स्टॉप्ड इट विदाउट इवन गिविंग एनी इंटिमिडेशन टू एनीवन। तो 60 रुपए आने लगा, आई थिंक रिसेंट में स्टार्ट किया होगा। दिल्ली में तो बंद है, आई अप्लाइड इन आरटीआई, आई गॉट अ रिप्लाई, गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड ऑल सब्सिडीज इन दिल्ली। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। दैट्स इज अनदर वे, डीबीटी। देखिए आइडिया तो अच्छा है, आइडिया इज गुड, बट नॉनदलेस क्या कह सकते हैं, इज क्लियर?
So this is another scheme, direct benefit transfer. Government transfers a lot of things using Aadhaar. बोलेगा इस क्लियर है, इसमें बहुत सारे देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वन नेशन वन राशन कार्ड, जनधन आधार मोबाइल, कोविन फेस ऑथेंटिकेशन, दीज ऑल आर बेसिकली आधार बेस्ड सर्विस। इन सब में आपका आधार लगता है। वैसे आजकल तो एवरी गवर्नमेंट सर्विसेज में यू रिक्वायर आधार कार्ड, इट इज मोर लेस यूबिक्विटस। So these all are the schemes of various government. In all of this, Aadhaar card is required. तो समझ लेते हैं काहे। समय टाइम नहीं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, तो दिस वाज इश्यूज इंडिया में। एचडीआई में वी हैव गॉन डाउन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वी हैव गॉन डाउन, आपका इनइक्वालिटी जैसे एसडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट में वी हैव गॉन डाउन। आपका इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड पॉवर्टी कैपिटल अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। तो बेसिकली ऑल सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में वी हैव गॉन डाउन, and to do this some initiatives are listed by this economic survey that we have to cover. Remember ये chapter आपका governance paper के लिए ज्यादा important है। Improvement in employment में according to this what are the improvement? Let's see. There is a survey of Government of India. Remember this annual periodic labor force survey. It is published by Ministry of Labour. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, please check it once. But it is published by Government Ministry of Labour. हाँ, लेबर ही करती है। The Ministry of Labour published a survey. It's a government official record. Annual periodic labor force survey. So have improved. According to this, both male and female may, both in rural area and urban area. In 2018-19 से 1920 में it has improved. मतलब according to this, by 2020 तक there was improvement in labor employment. That is what it says. And now there is a recovery. वो common sense है, मैंने आपको बताया था, economy is opening up, more jobs are giving to the people. That is it. Regional statistic, while rural labor market indicators have been improved both for male and female, urban labor market is slightly behind pre-COVID level. Current status according to economic survey, basic आप sense लगा लीजिए कि labor employment is coming back. Simply stated. इतना पढ़ना है हमें। As economy is opening up, people are starting to get their jobs. और याद रखिएगा, when I say labor employment, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। You people are not counted as a labor. उनकी बात नहीं हो रही है। I'm talking about particular labor that you see, for example, construction site with the labor you see. हम उनकी बात कर रहे हैं। Those people who are employed on daily wages or some kind of wages, that is the thing. Clear? Share of employment में देख लेते हैं। The share of self-employed people has increased. So what is the thing? Employment has increased. Labor employment has also increased, but the biggest increase have been seen is self-employed people. Why? Because there was a survey. There are a lot of people who have given hope of jobs. बहुत से क्या होता है? You try for a job for some time. When you don't get a job, you start your own whatever you want to start, a small kirana shop or something. There are a lot of people in India who have given up their hope of having a job. Gig workers, हाँ, काइंड ऑफ क्या कर सकते हैं। बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, हाँ, पत्रकार चाय वाला भी आ गया है अभिनव। चाय वाले बहुत आने वाले हैं। चाय वाला जब से प्रधानमंत्री बना, चाय वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। पर देखिए, स्टार्टअप इज अ गुड थिंग, नो डाउट। देखिए, बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, बहुत अच्छा आइडिया। बट रिमेंबर, हर कोई कंपनी नहीं बना सकता। एवरी स्टार्टअप कुछ लोगों के लिए होते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए जॉब काम आती है। जैसे गिग वर्कर की रमन जो आपने बात की, लार्जली हम कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो गिग वर्कर क्या होते हैं? दे रेज इनवॉइस, दे आर नॉट शोन एम्प्लॉयड एनीवेयर, दे जस्ट प्रोवाइड देयर इंटेलेक्चुअल सर्विसेज पर्टिकुलरली। तो काफी हद तक कह सकते हैं। बिल्कुल अफेक्ट करेगा। यस, इट विल अफेक्ट द लेबर क्लास। द मनरेगा फंड जो डिक्रीज हुए लेबर क्लास पे बिल्कुल इंपैक्ट डालेंगे। और सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है? हैव यू, इफ यू हैव सीन द न्यू पीपल हु आर हियर, प्लीज डू वॉच यूट्यूब पे हमारी वीडियो है। आई हैव डन द इकोनॉमिक
क्या बोलते हैं बजट दिस ईयर, देख लीजिएगा उसे। मैं फिर बता रहा हूँ फॉर द न्यू स्टूडेंट पर्टिकुलरली, हर साल का आपको यू हैव टू कवर द बजट इकोनॉमिक सर्वे कंपल्सरली, बिना इफ एंड बट के। इट डजंट मैटर विच ईयर यू अटेम्प्ट, बट एवरी ईयर बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड प्रेसिडेंट स्पीच, ये तीन चीजें हर साल कवर करनी है, कुछ भी हो जाए। हाँ दमन, यस। लॉजिक सरकार का यही है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेबर क्लास बनेगी, लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। दैट्स आवर कंसर्न प्राइमरली। इनइक्वालिटी का आंसर नहीं दिया है, इसलिए इस इकोनॉमिक्स बजट ने, दिस ईयर गवर्नमेंट बजटिंग में दे हैव नॉट टच्ड इकोनॉमिक थिंग, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थिंग। चलिए वो देखेंगे। तो एनीवे, इज इट क्लियर? सेल्फ एम्प्लॉयड हैज इंक्रीज, लेबर इज बेसिकली इंक्रीजिंग। ये आपका जो भी है देख लीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज, रेगुलर वेजेस लगभग देखिए यहाँ तक आ रही है, रेगुलर वेजेस देखिए कम हुई है। तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड इज इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट जनरली हैज इंक्रीज, रेगुलर वेजेस पीपल हैव गॉन डाउन, कैजुअल लेबर इज आल्सो हैव गॉन डाउन। कैजुअल मतलब हुआ सम टाइम एम्प्लॉयड सम टाइम नॉट एम्प्लॉयड वाली बात। ये तो, ये दो आपके काम के नहीं है, हाँ ये हमारे काम के हैं। राइज इन ईपीएफओ ईएसआईसी सब्सक्रिप्शन, ये एक और गेम है। आई थिंक दमन ने पूछा ना गेम कैसे खेले जाते हैं, ऐसे खेले जाते हैं डेटा में, गेम कैसे खेलते हैं। लेट्स सी, let's say you are a company XYZ. In that you employ 10 people. 8 people are casual worker. Casual worker mane they are not on your role. They are contract based, and usually contract are of 11 months. And 2 people are basically regular who are on your payroll. फर्क क्या होता है दोनों में? रेगुलर पीपल जो होते हैं दे कवर्ड अंडर द लेबर लॉस, you have to provide them employees provident fund, that is your basically pension fund. You have to provide them maternity benefit, parental leave, this leave, that leave. They are regular people of your company, labor laws are applied, ठीक है? तो let's understand, if I add these two people, so these two people will have a account on EPFO. What is EPFO? EPFO is an organization that controls provident fund. मतलब when you start doing a job, you give a part of your salary, small part of your salary in a fund called EPFO. EPF. EPFO is a body that regulates a fund called EPF, Employees Provident Fund. You contribute a money there. Based on that, your pension is generated whenever you retire, and you can also withdraw that money whenever you need for some emergency. Restrictions apply. So EPFO ये लोगों को मिलता है, इनको नहीं. Now imagine this. After 2 years, I made out of these 8, I gave 2 people into EPFO. अभी भी मेरे पास कितने लोग हैं? 10 लोग. This is the game. If you are the government data ना, तो government always say that EPFO subscription has increased. जैसे ना, net addition to EPFO subscription was 58.7% higher than इतना higher, इतना whatever. मतलब it has increased a lot. Understand this. It does not mean more jobs have been given. I had 10 people, 8 were contract, 2 were regular. Now I have added 2 people to EPFO. Now I have 4 regular people, 6 contractual labor. Still I have 10 people. तो ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन इंक्रीज का मतलब ये नहीं है जॉब्स हैव इंक्रीज. दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम दैट पीपल आर सेइंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट में वी आर गोइंग, अनएम्प्लॉयमेंट में देयर आर लॉट ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, स्टिल देयर इज ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन इंक्रीज. सो इट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर, नॉट द सोल इंडिकेटर. ये कहने का मेरा मतलब है. क्लियर एवरीवन? कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. हाँ इंपॉर्टेंट है, यस कमन इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एंड न्यू पेंशन का. अगर एक प्रीलिम्स में कैसे आ सकता है, लेट मी, अलग है वो, इंश्योरेंस वाला होता है. ईएसआईसी इंश्योरेंस स्कीम. व्हेन यू आर एम्प्लॉयड ना, यू गिव ईपीएफओ, also you get a insurance by which you can use in various ESIC hospitals बोलते हैं. Some private hospital they are on the panel of government in ESIC. You contribute a part there, you can go to those private hospital for the treatment free of cost under ESIC. कुछ गवर्नमेंट के खुद के भी ESIC हॉस्पिटल होते हैं. हाँ, so what that,
और देखिए ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम दैट इज गोइंग ऑन, इसमें कैसे आ सकता है, देख यू प्रीलिम्स में इफ दे आस्क, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन दिस, which of the following statement are true about old pension scheme, या which of the following statement are true about new pension scheme, इस तरीके से आ सकता है। नहीं भी आया तो मेंस में दे, मे बी मेंस में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, डिफरेंशिएट द ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम, व्हिच स्कीम यू थिंक इज बेटर, और ये इंटरव्यू में होगा तो आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू पूछ लेगा, व्हाट यू थिंक शुड बी स्विच टू न्यू पेंशन स्कीम, इस तरीके से। देखिए कंटेंट सेम है बट तीनों स्टेजेस में पूछने का तरीका अलग होता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू। क्लियर एवरीवन? भारत सरकार की एक योजना भी है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके तहत अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव कम बेसिकली, जो भी है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, कितना लंबा खींचेंगे इसे। मनरेगा में मैंने आपको बताया था, मनरेगा में गवर्नमेंट हैज इंक्रीज फंड, अमोरिया मनरेगा इज अ स्कीम व्हिच यू विल डू लेटर। वैसे मनरेगा स्कीम इज अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड्स 100 days guaranteed employment, anyone who want to seek employment, but remember it is labor class employment, means unorganized, oh sorry, unskilled work employment, अब ऐसी employment नहीं है। So of course pandemic के time पे government had this the best opportunity to give people to मनरेगा and that's why it increased. So let me summarize this chapter for you. तो चैप्टर क्या कह रहा है, ये चैप्टर कह रहा है बेसिकली दैट गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव, जैसे हमने पढ़ा प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोग्राम, ठीक है, these programs government has initiated basically for socio-economic upliftment, but on various indicators we have gone down. Employment के terms में according to economic survey employment has been coming back, because of course corona has been lifted, more economy is being opened, people are starting new businesses and new firms are being established, more employment is being given. That is what is happening in Indian economy right now. Right now means 2022, अभी का नहीं पता। बोले guys any question so far? ये बहुत नहीं है ना, चलो फिर लेट्स एंड द क्लास, और नेक्स्ट से वी विल, ये इकोनॉमिक्स से भी लंबा ही खींच रहा है, तो नेक्स्ट से वी विल स्विच टू नॉर्मल करंट इवेंट। द पीडीएफ्स आर अवेलेबल, revised PDFs are available on the portal, portal कह रहा हूँ, that folder, do go through it, any problem you encounter take a snapshot, mail me, I will reply you, or you can directly connect with me through a call. हाँ दमन, go ahead, what is your question? हाँ आदित्य, I will do that after class में देखता हूँ। उसी में है अभी ना, फोल्डर में, उस फोल्डर में इकोनॉमिक सर्वे के उस करंट इवेंट इज द नेम ऑफ द फोल्डर, विद इन दैट इज इकोनॉमिक, यस 2 पीडीएफ होंगी, previous 6 chapter then 6 chapter, there are 2 parts, 6 chapter 6 chapters। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको, चलो करंट इवेंट में आप लोग हैं नए बच्चे, उनके लिए मैं बता देता हूँ, लेट्स मी टेल यू समथिंग गुड। तो पेज खाली नहीं है, ये खाली है। करंट इवेंट में आपको क्या कवर करना है, बिकॉज यू आर हियर, तो लेट मी टेल यू। करंट इवेंट में देखिए की रूल्स हैं दैट यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड। पहला, नो पॉलिटिकल न्यूज, वी डोंट केयर राहुल गांधी ने क्या बोला, रविंद्र केजरीवाल ने क्या बोला, नो, बट स्पिन ऑफ्स आर इंपॉर्टेंट। नो पॉलिटिकल न्यूज बट स्पिन ऑफ्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे दमन ने बोला राहुल गांधी केस में व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द लीगल डायमेंशन ऑफ इट, that is a particular defamation case that you will study in article 19 में is a case, you have to cover that, representation of people act you have to cover। अभी ना आरटीआई एक्ट 2005 का है वो, अच्छा ठीक है आपने लिख दिया, ठीक है ठीक है। आरपीआई एक्ट आपको कवर करना है, व्हाट आर द प्रोविजन, दे आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कवर द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ इट। सो नो पॉलिटिकल न्यूज हैव टू कवर, बट यू हैव टू कवर स्पिन ऑफ्स ऑफ डेफेमेशन एंड जो भी आपके बनते हैं, द सिलेबस वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड थिंग, नो फैशन न्यूज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी क्या मूवी है, क्या हो रहा है, नो फैशन न्यूज एंड नो स्पोर्ट न्यूज। एंड अनदर की रूल, मेक नोट्स, हमेशा नोट्स बनाने ही बनाने हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू गो इन क्लास, फॉर एग्जांपल यू स्टडी पॉलिटी में आपने बनाया, तो व्हाट यू विल डू, व्हाटएवर यू स्टडी इन करंट इवेंट, ऐड टू द सिलेबस राइट एंड देयर, एक ही बुक रखनी है आपको,
उसी को आपको करंट इवेंट्स में ऐड करते जाना, बिकॉज अदरवाइज यू विल हैव सो मेनी बुक्स एंड यू कैन नॉट रिवाइज व्हेन प्रीलिम्स विल बी देयर और मेंस विल बी देयर। दैट्स यू हैव टू अचीव। फॉर डिटेल एनालिसिस यूट्यूब पे प्लीज प्लूटस के पोर्टल पे जाइएगा, वहां पे आई हैव मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन करंट इवेंट, हाउ टू डू, हाउ टू मेक नोटबुक, हाउ टू डू एवरीथिंग। पोर्टल पे अवेलेबल है, डू वॉच इट। क्लियर? जो कॉम्प्रिहेंसिव है, हाउ टू पे, हाउ टू, आई थिंक द आर्ट ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी वीडियो का नाम है, द आर्ट ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी, डू वॉच इट। क्लियर एवरीवन? बिल्कुल, अगर आप इस ईयर का प्रीलिम्स कर रहे हैं ना, तो आज क्या, यू कैन स्टॉप नाउ इफ यू आर गोना अटेम्प्ट दिस। यस अमोरी, आई विल डू दिस। स्टॉप करंट इवेंट्स नाउ, बट क्लास अटेंड करते रहिएगा। क्लास में क्या है, रिवीजन हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हम रिवीजन ही करें, बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे तो रिवीजन हो जाती है। नया कॉन्सेप्ट याद मत कीजिएगा, जस्ट हैव अ क्लास, इसे समझिए लाइक अ लेक्चर, लाइक अ सरमन। सुनो, काम का लगे, रिवीजन हो रही है ठीक है, नहीं हो रही तो डू नॉट कैच एनीथिंग हियर। क्लियर? यू कैन स्टॉप इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस ईयर प्रीलिम्स, इट्स हाई टाइम। जो लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज एवरीवन कीप ऑन डूइंग दिस। डू वॉच दैट वीडियो, यू गेट एवरीथिंग। चलिए बाय एवरीवन, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे से वी विल स्विच टू नॉर्मल करंट इवेंट, प्रॉपर प्रीलिम्स बेस्ड। वेरी वेलकम, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड एवरीवन, बाय बाय।